करना है करो, आपको मुझे ग्रुप में से निकाल देना हो तो आप निकाल भी दो, ओके, लेकिन मैं ऐसा ही करूंगा। तो मैं वो दिन बराबर लाइन पे था, उन्होंने 5 से 6 मरतबा कोशिश की, अपना फोन अनम्यूट किया तो मैंने म्यूट कर दिया 5-6 बार। बाद में बोलते आप मुझे मेरा फोन म्यूट कर देते हो, ऐसा तैसा। मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि ऑलरेडी बात हो गई थी। बाद में बोला आप ऐसा करो तो मैं निकल जाऊंगा, तो मैंने कुछ नहीं बोला, वो खुद ही निकल गए। तो अभी इतना हमने बर्दाश्त किया। अभी मौला की इच्छा ही नहीं थी कि ऐसे लोगों ग्रुप में रहे हुए, तो खुद ही चले गए, राइट। तो अभी भी हमारे हक में तो हम याद करते तो हमारे हक में दुआ कर, हम उनके हक में दुआ करते। तो देखो 4 तरीके के लोग बताए मौला ने, उसमें कैसा भेद और खूबी है कि पहले तरीके के लोग सिर्फ हमको ही चाहते हैं, दुनिया को नहीं चाहते, उनका दिल हमारा दिल से लगा हुआ है, तो ये दुनिया में भी हमारे साथ है, वो दुनिया में भी हमारे साथ में रहेंगे। दूसरे तरीके के लोग जो दुनिया को भी चाहते हैं, मुझे भी चाहते हैं, तो उनके लिए मेरी दुआ है कि दुनिया की ओर इश्क कम हो रही, मेरी ओर बढ़े। तो 50% है, उसको भी बोला कि 60, 70, 80, 90, 100 हो जाए। जिसका 99 है, 99%, उसको भी बोला कि 100% हो जाए, बराबर। तीसरे तरीके के लोग हैं, मौला ने फरमाया हमको नहीं चाहते और हमको दुख भी नहीं देते, तो मौला वो जाने, उनका काम जाने। यानी हमको नहीं चाहते, हमारे पे ईमान नहीं है, लेकिन हमको दुख भी नहीं देते, वो जाने, उनका काम जाने। चौथी तरीके के लोग मौला ने फरमाया हमको नहीं चाहते हैं और हमको दुख देते हैं। तो एक तो हम फरमा बरदारी भी नहीं करते, मौला पे ईमान भी नहीं लाए और निंदा करते हैं इल्म की के मौला की के असगरफिल्लाह इल्म मिल्लत के भाई बहनों की इल्म की निंदा करते हैं। तो ऐसे लोगों को मौला फरमा कि एक तो हमारे फरमान पे अमल नहीं करते, ईमान नहीं लाते, मुझसे प्यार नहीं करते और मुझे तकलीफ देते हैं, क्योंकि मौला को तकलीफ पड़ती है ना। हमारे पाक मोमन को हम हमारी आंखों में रखते हैं, ऐसे मोमन को कोई दुख दिखा तो जैसे हमारी आंखों को दुख दिया, हमारे पाक मोमन को कोई दुख देता है तो हमारे कलेजे में बाण लगता है, ऐसी हमको तकलीफ होती है। तो मौला ने फरमाया हमको चाहते भी नहीं है और हमको दुख देते हैं। तो देखो मौला ने क्या फरमाया, हम उनके हक में दुआ करते हैं। तो मौला दुआ करता है उनके हक में, और कैसे दुआ करता है कि खुदाया हमको ऐसे लोगों से दूर रखे। बोलो खुदा, मौला तो खुद ही खुदा है, लेकिन वो कहता है कि ऐसे लोगों से तो दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के करीब हम जाते हैं ना तो उनके हसद में इजाफा होता है, और हम नहीं चाहते कि उनकी हसद में इजाफा होवे, उनकी निंदा में इजाफा होवे। इससे तो बेहतर है कि हम ही दूर हो जावे ऐसे लोगों से। अगर हमको पता चल गया कि भाई हमारे कुटुंब परिवार में या जमात में कोई ऐसा है जिसको हम पहले मिल चुके हैं और नादान है, फरमान नहीं सुनता है और फरमान ध्यान में नहीं लेता है, मूर्ख नादान है, नादान दिन का दुश्मन है, जो इल्म ज्ञान पढ़ना और उसकी मायना निकालने को मना करते हो दिन के दुश्मन है। तो मौला ने फरमाया कि हमने आपको ईसा पैगंबर का दाखला 3 मरतबा दिया है। तो ईसा पैगंबर जैसे तो वो नादान से दूर भाग गए, तो आप ऐसे नादान लोगों की दोस्ती करोगे तो आपको क्या फायदा होगा। तो कई लोगों को तो हम पहचानते कि भाई इससे तो दूरी रहो तो अच्छा है, भाई दुआ सलाम ना करनी पड़े तो भी अच्छा है, पर सामने से नजर मिल गई तो और आता है तो हमको यानी मदद मौला में करना पड़ता है, नहीं तो वो सोचेगा देखो नजर मिली और पास से गुजरा तो भी यानी मदद नहीं कहा। लेकिन ऐसे लोगों को सामने से जाके मिलने की जरूरत नहीं है, बराबर। वो हम इल्म पढ़ते रहेंगे, नसीहत करते रहेंगे, तो नसीहत करने में मौला ने फरमाया कि अगर आप नसीहत करना किसी को चाहते हो तो पहले उसको समझो, उसके दिन को समझो, राइट। तो आपको खुद ही पता चलने लगेगा और आपका दिल ही बोलेगा कि नहीं यहाँ नहीं जाना है, इधर मुझे तो नुकसान है, उसको भी नुकसान होगा। अगर मैं वहां जाऊंगा वो वापस ही गांडी गलोच गुस्सा करेगा, निंदा करेगा, हसद करेगा, तो उसको भी तो नुकसान होगा। तो मैं ऐसा क्यों करूं कि भाई मैं मेरे बारे में सोचूं तो मुझे उसके बारे में भी सोचना चाहिए, तो वो भी कोई हसद निंदा ना करे, राइट। तो ये सारी चीजें हमको समझ में आती है, हम खुद इल्म में मेहनत करते हैं, दूसरों के लिए मेहनत करते हैं तो समझ में आती है। तो वापस मैं आपके जरिए सबको कहता हूँ कि बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप जैसा करते हो वैसा ही करो। ये तो इनडायरेक्टली मैंने ऐसे लोगों को मैसेज पहुंचाया जो हमारी इल्म मजालिस की, हमारे इल्म ग्रुप की, हमारी वाइजों की, हमारे इल्म मजलिस के मेंबरों की तारीफ होती है, तो कई लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है और वो इंटेंशनली आते हैं झगड़ा करने को, ये करने को, राइट। तो उनको मेरा मैसेज जाना चाहिए, उसलिए मैंने कहा है। लेकिन आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे हो, 99.99 सब अच्छा ही है हमारे इल्म मजलिस में, ग्रुप में। तो जैसा आप करते हो वैसा ही करते रहो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन थोड़ा अलर्ट रहो, बराबर। तो देखो मौला ने फरमाया कि अक्ल सांप जैसी होनी चाहिए और कबूतर जैसे गरीब बनो। तो सांप जैसे तो काटना नहीं है, लेकिन गुजराती में बोलते नहीं फुफाड़ो मारवो,
ऐसे सांप कैसा खड़ा रहता है फैन लगा के सामने वाले को ऐसा लगेगा भाई इसके नजदीक नहीं जाना है। और दुख पड़े तो कबूतर जैसे गरीब बनो। तो हमको किसको काटना नहीं है, लेकिन फॉर्म रहना है, कड़क रहना है थोड़ा, राइट। कि देखो भाई हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, हम किसी का हक नहीं खाते, लेकिन हम हमारा हक भी नहीं जाने देंगे। हमको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हम हमारा बचाव करेंगे। तो खुद को प्रोटेक्ट करना वो माशाल्लाह अच्छी चीज है, लेकिन हमारे पे को हमला करता है तो हम भी जवाब देते हैं, राइट। तो ये जवाब क्या है, सदियों से चलता है। इलम की कलम से और इलम की जबान से ये ताविल तंजील का जो वॉर है ना, वो पहले से ही चलता है। जंगे सिफिन में क्या हुआ था, यही तो हुआ था। करीम आज़म फरमाए कि जंगे सिफिन में क्या हुआ था, हजरत अली और मुआविया के बीच में क्या बना था, राइट। तो ऐसी सारी चीजें लाइफ में आती है। हमको सब सीखता सीखता होशियार अक्लवान इल्मी तथा हिम्मतवान થાય છે, प्रतिशत बुद्धिवान दाना साचो ने साफ बातों न हो। तो जैसे जैसे हम इल्म पढ़ते जाएंगे, मेहनत करते जाएंगे, हमको खुद ब खुद समझ में आता जाएगा सब। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो हमारे ऑनलाइन मौला की मेहरबानी हम डिस्कस कर सकते हैं। कोई ऐसी मैटर है पर्सनल तो आप मुझे रूबरू भी बात कर सकते हैं, सही है जी। तो माशाल्लाह आप लाइन पे आए तो आपके जरिए बहुत कुछ बोला गया, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा जी। मेरे लिए भी बहुत कुछ सीखने को मिला, शुक्र मौला। शुक्र मौला अली मेरे। तो देखो जो अभी जैसा एक फैमिली जैसा हो गया, राइट। हमारा रिलेशन मौला की मेहर में, जैसे हम सब एक ही मौला को चाहते हैं, राइट। तो देखो अमल मौला पे ईमान होना वो एक ही चीज है। जैसे रसूलुल्लाह का कलमा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह एक ही है और मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, ये कलमा है। हमारे कलमा ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली अमीरुल मोमिनीन अली अल्लाह। तो हम अली जो हर इमाम मौला मुर्तजा अली शाह करीम, तो उस पे हम सब इस्माइली ईमान लाए, राइट। और हम हमारे अंदर क्या एक दिली है कि हमने सिर्फ इस्माइली मस्जिद में नाम नहीं लिखा है, हमने तय किया है कि हमारे जीते जी हमारा रूह मौला के नूर में एक हो जावे। और यहाँ तक भी हम नहीं रुकेंगे, हम ये कोशिश करते रहेंगे कि दूसरे रूहों को भी नजात मिले, इस्माइलियों को। हमारे फैमिली में, कुटुंब परिवार में, जमात में हम इसकी कोशिश करते रहे कि ऐसा इल्म, जैसे हम इल्म मजालिस में नहीं थे, हमारे लिए किसी ने मेहनत ली और आज हम इल्म मजलिस में आए। हम हमारा फुर्सत का टाइम पहले टीवी देखते थे, गप्पे लड़ाते थे, ये करते थे, वो नहीं करते। अभी मौला की मोहब्बत में दम भरते हैं, राइट। इस तरह हम भी दूसरों के लिए मेहनत करें, सही है। आप सुन रहे हैं आप? हेलो, तो आप बात कर रहे थे, बाद में फोन आपने शायद आप सुनने के बाद पूरी हो गई तो म्यूट कर गया, कोई बात नहीं। तो देखो अभी जलालू भाई भी लाइन पे आए थे, तो मैं भी उनको बताने चाहता हूँ कि बैतुल खाल की बंदगी अलबत्त इबादत है, लेकिन सिर्फ इतनी इबादत नहीं है। इबादत तो मौला ने फरमाया कि हर पल हर शायद खुदा को याद करना चाहिए। हेलो, हाँ बराबर। तो मैं समझा चले आवाज बार बार कट रही है, फोन भी कट रहा है। हेलो, हाँ वही आवाज कट रही है, फोन भी कट रहा है। तो सॉरी अभी और आ रही बराबर? हाँ आ रही है। तो देखो अभी आप मौला पे ईमान लाए, तो हम सब मौला पे ईमान लाने वाले हैं, और सब इस तरह हम आपस में भाई बहन है, एक ही नफस में से हमने खुदा ने पैदा किया है। और सिर्फ अपने इस्माइली मस्जिद में नाम नहीं लिखा है, हमने तय किया है कि एक जन्म में हमारा रूह का काम हो जावे। तो इल्म मजलिस तो सबका मकसद यही है, राइट। और उससे भी ऊपर हम ये कोशिश करते हैं कि जैसे हमारे लिए किसी ने मेहनत की, हम पहले इल्म मजलिस में नहीं थे तो हमारा टाइम टीवी देखने में या गप्पे लड़ाने में जाता था, उसमें अभी हम थोड़े सीरियस हुए हमारे रूह के काम के लिए, और हम ज्यादा वक्त देते हैं मौला की यादगिरी के लिए, राइट। और दूसरे के लिए भी मेहनत करते हैं। तो हम जैसे हमारे लिए भी किसी ने मेहनत की, इसलिए हम भी करेंगे दूसरों के लिए, राइट। तो ये मौला चाहता है, बराबर, कि आप में से हर एक को अपने मजहब का गहरा इल्म और सच्ची समझ होनी चाहिए रूह की। और ये इल्म और रूह की समझ देने के लिए जो दूसरे के लिए मेहनत करते हैं वो, और जिन्होंने तय किया है ऐसा इल्म हासिल करे, सबके लिए हम प्यार मोहब्बत भरे दुआ आशीष फरमाते हैं, बराबर। तो ये समझ की वजह से, ये हमारा जो मकसद है उसकी वजह से हमारी एक फैमिली जैसा हो गया है रिलेशन, कि सिर्फ एक ही बार मिलते हैं, और कई लोगों तो नहीं मिले जाहिर में तो भी इतनी मोहब्बत हो गई आपस में, राइट। क्योंकि हमारा मौला एक है, हमारा मकसद एक है, हमारा काम एक है, और लोग राजी खुशी से खुदा की मौला की इबादत करते हैं, राइट। और देखो अभी जलालू भाई ने बात की थी कि बैतुल खाल की बंदगी, तो बैतुल खाल की बंदगी ऑफ कोर्स
तो वो इबादत है, लेकिन सिर्फ इतनी मायना नहीं है इबादत की। तो मौला ने फरमाया अपने मजहब के लिए टाइम निकालना, अपने मजहब के लिए सोचना और उसके मुताबिक अमल करना, ये सारी इबादत है। तो इल्म पढ़ना, लिखना, बोलना, याद करना, ये सब भी इबादत है, राइट। तो पूरा पूरा जिंदगी इबादत है, मन वचन कर्म से हम जो भी फरमा बरता है सब इबादत है। और मौला ने फरमाया कि जमात की खिदमत करने में इबादत से भी ज्यादा फायदा है। तो वो क्या है, वो जाहिरी खिदमत की बात नहीं हो रही है, वो जमात की खिदमत का जो दर्जा इबादत से भी बुलंद है, वो मौला ने फरमाया कि परमार करीने बीजाना जीवने छोड़ावो એ 1000 વર્ષ બંદગી કરો તેના કરતા વધારે છે। कि परम अर्थ यानी परम खुदा के लिए, तो खुदा का अर्थ, खुदा की मायना यानी जो नूर निरंजन निराकार है, उसका इल्म हासिल करके दूसरों के रूहों की नजात के लिए काम करना, तो उसका दर्जा तो इबादत से भी ज्यादा है। क्योंकि उसके अंदर आप सिर्फ इबादत तो आप अपने लिए करते हो और नसीहत तो आप दूसरों के रूहों के नजात के लिए, उनका ईमान मजबूत करने के लिए करते हो। तो 1000 साल बंदगी करो, उससे भी उसका दर्जा ज्यादा है। तो ये खिदमत की बात हो रही है, दूसरों के रूहों को नजात करने के लिए खिदमत करते हैं, राइट। जी 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 बराबर सही आपका। तो अभी मैं आप फोन म्यूट कर दो, अभी भी 8 मिनट है, कोई बात करना चाहता है 8-10 मिनट तो मैं बात कर सकता हूँ। शुक्र मौला यानी टाइम हो गया है तो मौला बैठेंगे आप। तो और कोई बात करना चाहता है तो वैसे तो टाइम हो गया है, एक ही मिनट बाकी है बात करने के लिए, लेकिन कोई 5-10 मिनट बात करना चाहता है तो हम कर सकते हैं। તો બીજું કોઈ વાત કરવા માંગતો હોય મારી સાથે તો પોતાના ફોન પર 2 વાર સ્ટાર દબાવીને ફોન અનમ્યુટ કરે અને મારી સાથે વાત કરી શકે છે। મુંજરાબેન કોઈ છે ફોન પર, તમારા કોઈ મેસેજ છે, કોઈ વાત કરવા માંગે છે? नहीं करीमભાઈ, ત્યાં ફરજાના બેન તમારા કોઈ નહીં? नहीं। તો આપણે ઇન્શાલ્લાહ નેક્સ્ટ ટાઈમ વાત કરીશું। હવે 4:22 થઈ ગયા તો 8 મિનિટ બાકી છે, બરાબર ઇન્શાલ્લાહ 8 મિનિટના અંદર પૂર્ણાવતીના ફરમાન મુબારક અને આપણે દુઆ આપી દઈશું, ઠીક છે? તો આપણે ફરમાન મુબારકની યાદી આપી, દુઆ આપીને ઇલ્મની તારીફ પૂરી કરીએ। તમે અમને ઘણા વહાલા લાગો છો, તમને અમે અમારા અજીજ ગણીએ છીએ। આ બધો ઈશ્ક તમારા વિચાર અને મોહબ્બત વાસ્તે છે। અમે તમારા તરફથી ઈશ્ક શીખીએ છીએ, તેથી અમે તમને સારો રસ્તો દેખાડીએ છીએ। જે માવિત્ર પોતાના બચ્ચાઓનો હાથ ડાલીને ચલાવે છે તેમ અમે તમને ચલાવીએ છીએ। જો આવો મોટો દરિયો છે અને તેમાં પહાડો અને મોટા મોટા જાનવરો છે, તે બધું પસાર કરીને અમે અહીં આવ્યા છીએ, તે ખાસ અમારા મોમનોને માટે આવ્યા છીએ। અમે અહીં આવ્યા છીએ કે તમારા જીવના છુટકારા માટે આવ્યા છીએ। અમે તમારા સારા કામ કરવા માટે આવ્યા છીએ। અમે તમને સહેલે રસ્તે પાર ઉતારવાને માટે આવ્યા છીએ। અમે તમારા માટે આસાન મઝહબ લઈને આવ્યા છીએ। ઇલમ વડે પહાડ જેવી મુશ્કેલ બાબત આસાન કરી દેવાય છે। અમારું દિલ ચાહે છે કે અમે હંમેશા તમારી પાસે રહીએ। જાહેરની જુદાઈ ઘણી સખ્ત છે, પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બાતુનમાં અમે અને તમે જુદા નથી। બાતુનમાં અમે હંમેશા તમારી પાસે છીએ। અમે અને તમે એક છીએ, હંમેશા અમે અને તમે જુદા નથી। તમે અમારા મુરીદ, અમારી હકીકતી ઓલાદ માફક છો। મુરીદ તથા મુર્શિદની દરમિયાન કાંઈ પણ જુદાઈ નથી। મોહમ્મદ અને મુર્શિદ ક્યારે પણ જુદા નથી, તેઓ હંમેશા એક જ છે। એવી રીતે દિલ હંમેશા મજબૂત કરી એક દિલ રાખવું જોઈએ। તમે અમારો ઈશ્ક રાખો છો અને અમે તમારો ઈશ્ક રાખીએ છીએ, ત્યારે હવે તમારામાં અને અમારામાં કાંઈ જુદાઈ નથી। અમે અમારા દિલથી તમને દુઆ કરીએ છીએ કે ખુદાયા તેમના દિલમાં એવી તાકાત બક્ષ કે આઝાદ થાય, હકીકતી થાય, ખરાબીથી દૂર ભાગે, રસ્તો સવળો પકડે અને સીધે રસ્તે ચાલે। ખુદાયા તેઓને હકીકતી આંખો બક્ષ। આ દુઆ સઘળી દુઆ કરતા વધારે છે। ઇન્શાઅલ્લાહ અમારા ફરમાન હંમેશા દિલમાં રાખજો, ભૂલી નહીં જશો। એ ન બને કે જ્યાં સુધી અમે જાહેરીમાં અંતરે હાજર છીએ ત્યાં સુધી અમારા ફરમાન વાંચો અને પછી ન વાંચો, એમ નહીં થવું જોઈએ। જેમ જ્ઞાન વાંચો છો તેમ અમારા ફરમાન વાંચજો। જેમ જ્ઞાનની માયના કાઢો છો તેમ અમારા ફરમાનની પણ માયના કાઢજો। અમારા ફરમાન એ જ જ્ઞાન છે। જ્ઞાનમાં, હદીસમાં, કુરાનમાં છે તેથી 100 ગણું અમે તમને ફરમાન દ્વારા સમજાવીએ છીએ। હમણાં જે ફરમાન થાય, જેમાં તમારો જીવનો છુટકો થાય તે પઢો। અમારા મોમન સારું એક ફરમાન જ બસ છે।
અમારા સિધાવ્યા બાદ એવું નહીં સમજતા કે સાહેબ સિધાવી ગયા. જેમ તમે ઇમામને હાજર સમજો છો તેમ હાજર સમજજો. હાજર ઇમામ જાહેર ઇમામ હંમેશા હાજર નથી બેસી રહેતા, પણ તેઓને હાજર સમજવા જોઈએ. અમે પણ હંમેશા તમારી પાસે બેઠા છીએ. અમે તમને સૌને એ ખાતરી આપવા ઈચ્છીએ છીએ કે તમે અમારી નજીક છો અને હંમેશા અમારા હૃદય અને વિચારોમાં છો. અમે જગતભરના ઇસ્માઇલીઓની ઉન્નતિ અને પ્રગતિ માટે અમારી જિંદગી અર્પણ કરી છે અને તમારા સર્વે સુખ અને સફળતા માટે દુઆ કરીએ છીએ. ખાના વદાન, ખાના વદાન. અમે દુઆ કરીએ છીએ કે તમે સુખી હો, તમારામાં શક્તિ હોય, તમારામાં સંપ હોય, તમારા દિલોમાં પ્રમાણિકતા અને નમ્રતા હોય, તેમજ તમારામાંના દરેક રૂહાની સંતોષ ધરાવતા હોય કે જે તમારા જીવન દરમિયાન તમને દોરવણી આપે, ભલે તમારા સંજોગો જે પણ હોય. અમે આશા રાખીએ છીએ અને દુઆ કરીએ છીએ કે તમે હંમેશા સુખી રહો, સફળ હો અને સર્વે ઉપરાંત તમારા દિલ હંમેશા નૂર, ઈમાન, નમ્રતા અને આનંદથી ભર્યા રહે. ખાના વદાન, ખાના વદાન. આજે સાંજે અમે સિધાવીએ ત્યારે અમે એમ ચાહીશું કે તમે બે બાબતો યાદ રાખો. એક તો એ કે અમે તમારામાંના દરેકની યાદ, દરેકનો ચહેરો અમારા હૃદયમાં લેતા જઈશું. બીજું એ કે અમારા માટેનો તમારો પ્રેમ કદી પણ હોઈ શકે તે કરતા અમારી જમાત માટેનો અમારો પ્રેમ ઘણો પ્રબળ છે. અને અમે ઈચ્છીએ છીએ કે તમે યાદ રાખો કે જ્યારે અમે સિધાવીશું ત્યારે તમારામાંના દરેક અમારા હૃદયમાં, અમારી દુઆઓમાં અને અમારા વિચારોમાં હશો. વળી તમને યાદ રહે કે ઇમામ તમને વધુ ચાહે છે. તમે તેમને ચાહી શકો તે કરતા ઘણું જ વધુ ચાહે છે અને આ જ્ઞાનમાં તમારે મજબૂત રહેવું જોઈએ. ખાના વદાન, ખાના વદાન. અમે તમને સૌને ખાસ ઉત્તમ પ્યાર ભર્યા દુઆ આશીષ ફરમાવીએ છીએ. ખાના વદાન, ઉત્તમ દુઆ આશીષ, ખાના વદાન. અને તમામ મિલ્લતના ભાઈ બહેનોને અને જગતના તમામ ઇસ્માઇલી ભાઈ બહેનોને અલી સહી અલ્લાહ મૌલા મુર્તજા અલી સહી ખુદાવીન આલમીન ઘડી સલામત દાતાર સરકાર આકા નૂર મૌલાના શાહ કરીમ અલ હુસૈન હાજર ઇમામ મહેરબાની કરી કરમ નસીબ ફરમાવી દયા કરી મૌલા દરેકને સુખી સલામત ને આબાદ રાખે. આમીન. માન છેલ્લા દમ સુધી સલામત રાખે. આમીન. બધી નેક ઉમેદો પૂરી કરે. આમીન. મૌલા બચ્ચાઓને એજ્યુકેશનમાં એક્સેલ કરે. આમીન. બચ્ચાઓને નેક તોફીક આપે. આમીન. મૌલા બચ્ચાઓની બધી મુશ્કેલ આસાન કરે. ઈમાન છેલ્લા દમ સુધી સલામત રાખે. સિરાતલ મુસ્તકીમ પર કાયમ રાખે. દુઆ દસોન શુક્રી ઇબાદતમાં ભરપૂર રાખે. મૌલા બચ્ચાઓને પોતાના ઘરની, જમાતની, ઇલમની સાચી મોહબ્બત એમના દિલમાં અંદર નક્શ કરી દે. આમીન. મૌલા બધાની કુલ મુશ્કેલીઓ, બીમારી, બલા, આફતો, તકલીફો, મૂંઝવણો, ગેરસમજણો દૂર કરે. આમીન. મૌલા મહેરબાની કરી કરમ બક્ષી ફરમાવી દયા કરી આપણા બધાના કુલ ઇસ્માઇલીઓના, કુલ કાયનાતના, કુલ રૂહાનીઓના મૌલા કુલ ગુનાહ માફ કરે. આમીન. મૌલા મહેરબાની કરી કરમ બક્ષી ફરમાવી દયા કરી મૌલા પોતાના ઘરની, જમાતની, ઇલમની આપણી ખિદમત કબૂલ કરે. આમીન. ખિદમત દરમિયાન કોઈ ફરક કે કસોટી ના નાખે. આમીન. ખિદમતનો બદલો દીન અને દુનિયામાં આપે. આમીન. મૌલા આપણને વધારે ખિદમત આપે. ખિદમત કરવા માટે હિંમત, શક્તિ અને પ્રેરણા આપે. આમીન. મૌલા મહેરબાની કરી કરમ બક્ષી ફરમાવી દયા કરી આપણા બચ્ચાઓની, જગતના તમામ ઇસ્માઇલીઓની મૌલા પોતાના ઘરની, જમાતની, ઇલમની આપણી ખિદમત કબૂલ કરી. ખિદમત દરમિયાન કોઈ ફરક કે કસોટી ના નાખી. ખિદમતનો બદલો દીન અને દુનિયામાં આપ્યો. મૌલાએ વધારે ખિદમત આપી. ખિદમત કરવા માટે હિંમત, શક્તિ અને પ્રેરણા આપી. આપણે મૌલાના લાખો શુક્રિયા અદા કરીએ છીએ. શુક્ર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. આમીન. આમીન. મૌલા દરેકને દુઆ દસોન શુક્રી ઇબાદતમાં ભરપૂર રાખે. આમીન. મૌલા ધંધો રોજગાર કમાણીમાં બરકત આપે. આમીન. કોઈના કરજવાન કે મોહતાજ ન રાખે. દીન અને દુનિયામાં આસુદા કરે. આમીન. ઇલમ બિઝનેસના ભાઈ બહેનોમાં અને જગતભરના તમામ ઇસ્માઇલી ભાઈ બહેનોમાં, આપસમાં, ફેમિલીમાં, કુટુંબમાં, જમાતમાં સંત સલાહ, ઇખલાસ અને મોહબ્બતમાં વધારો કરે. આમીન. મૌલા આપણી ઇલમ મિજાલિસની, ઇલમ ગ્રુપની, ઇલમ મિજલિસના મેમ્બરોની, મૌલા આપણે મૌલાની, ઇલમ મિજાલિસની, ઇલમ મિજલિસના ભાઈ બહેનોની આ ઇલમની આપણે કદર અદબ કરીએ અને એનું આપણે રક્ષણ કરીએ અને હંમેશા એના માટે આપણે તત્પર રહીએ તન મન ધનથી. તો મૌલા એના માટે આપણને હિંમત આપે અને આપણી આ બધી નેક ઉમેદો પૂરી કરે. આમીન. મૌલા કોઈનાથી બી ઇલમ મિજાલિસની, મૌલાની, ઇલમ મિજાલિસની, ઇલમ મિજલિસના ભાઈ બહેનોની ઇલમની કદી બી કોઈનાથી બેઅદબી થઈ હોય તો મૌલા એમને માફ કરી દે અને કદી પણ કોઈનાથી એવી બેઅદબી ના થાય. આમીન.
મોલા ઇલમ દસ્તા ભાઈ બહેનો અને જગતભરના તમામ ઇસ્માઇલી ભાઈ બહેનોમાં આપસમાં ફેમિલીમાં કુટુંબમાં જમાતમાં સબ સલાહ ઇખલાસ અને મોહબ્બતમાં વધારો કરે. આમીન. લાંબુ તંદુરસ્તી ભર્યું આયુષ્ય આપે. આમીન. આપણા દેશમાં અને જગતભરમાં જ્યાં પણ અશાંતિ છે ત્યાં સુખ શાંતિ સલામતી અને આબાદી ફેલાવે. આમીન. આપણા દિલ નૂર ઈમાન નમ્રતા અને આનંદથી ભર્યા રાખે. આમીન. ઇલ્મ જ્ઞાનમાં વધારો કરે, હકીકતની સાચી સમજ આપે. આમીન. બાતુની નૂરાની દીદાર નસીબ કરે. આમીન. આ જન્મમાં જ આપણને મૌલા એમના નૂરમાં એક કરી દે. આમીન. હાજરીન તમામ ઇલ્મ દસ્તા ભાઈ બહેનોના ફેમિલીના રૂહાની મેમ્બરોના અને જગતભરના તમામ ઇસ્માઇલી ભાઈ બહેનોના ફેમિલીના રૂહાની મેમ્બરોના અલી સહી અલ્લાહ મૌલા મુર્તજા અલી સહી ખુદાવિન આલમીન ગરીબ સલામત દાતાર સરકાર આશા નૂર મૌલાના શાહ કરીમ હુસૈની હાજરી ઇમામ મહેરબાની કરી કરમ બક્ષી ફરમાવી દયા કરી કુલ રૂહાનીઓના કુલ ગુનાહ માફ કરે. આમીન. બાતુની નૂરાની દીદાર નસીબ કરે. આમીન. અસલ મુબારકમાં વાસલ કરે. આમીન. શુક્ર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. થેન્ક યુ વેરી મચ. તમારા બધાનો ઘણો ઘણો આભાર. યા અલી મદદ. મોલા અલી મદદ.